हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय डीजी। आज आम डिस्कस करवा करेंट इलेक्ट्रिसिटी जोटा कि यूनिट 7 ऑफ LTR 2025 सिलेबस फॉर द PCM स्टूडेंट्स। जो मैंने PCM कैटेगरी आसर जो फिजिक्स पेपर अच्छी से टोटल फुल मार्क्स आसो 40 मार्क्स मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 इच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स से गोटे यूनिट होची करेंट इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस यूनिट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ऑलरेडी यार लाइव क्लास स्टार्ट हो लाइव क्लास स्टार्ट को जॉइन करने डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी कि कंटाक्ट से व्हाट्सएप नंबर अच्छी से व्हाट्सएप नंबर रे कंटाक्ट करूँ सो दैट से ग्रुप रे आमको जॉइन करके तुम लाइव क्लास अटेंड कर पारिबो। सो करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर रे फास्ट आम डिस्कस करिया करेंट कौन। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास समस्त को ये एडवाइस रहिबो कि विथ पेशेंस वीडियो को फास्ट टू लास्ट जाए देखंतु। जदि तो मैंने ऑलरेडी जानिछ सब माने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी प्लस टू रे पढ़िछ कि 1-2 टाइम्स रिवाइज हो जाइए स्टिल ताको 2x स्पीड रे वीडियो को देखिकी बेसिक्स कॉन्सेप्ट खाली टिके देखार अच्छी सहित किसी एक्स्ट्रा जिनस तुम न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करार अच्छी मुझे न्यूमेरिकल करेबी तो सेगुड़ा देखार अच्छे। तो पेशेंस रख 10 मिनट वीडियो 1 मिनट कि 5 मिनट्स कि 10 मिनट देखिकी वीडियो क्लोज करदेले बहुत किसी जिन शिखिपार से कीप पेशेंस पेशेंस रखिकी वीडियो को फास्ट लास्ट देखियो। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग हो LTR तो ऑलरेडी प्रिलिम एग्जाम हो जाइए तो प्रिलिम किसी पिला क्वालिफाई करेंगे किसी पिला क्वालिफाई कर भी न पारती। तो देखो आगो को तो हाई स्कूल टीचर एग्जाम अच्छी तुम मैंने ऑलरेडी PCM कैटेगरी अच्छो से वीडियो देखुच। सो PCM तो डेफिनेटली फिजिक्स पार्ट तो रही इंपोर्टेंट पार्ट। तो आगो को जो हाई स्कूल टीचर एग्जामिनेशन हम सब से सेम सिलेबस तो से फिजिक्स एग्जाम तुमको देवाई ही पड़ो। तो वन टाइम समस्ते निश्चित भाव में बेसिक माने कोर कॉन्सेप्ट को क्लियर हवा दरकार। बर्तमान जो एग्जाम होची से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बेसी आने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप बट यूनिक क्वेश्चन सब बड़े फॉलो अप हो आम समस्त जानते ओम्स लॉ V=IR आउ रेजिस्टेंस R=ρL/A एवरीवन नो दिस फॉर्मूला बट से भी क्वेश्चन आम मिस्टेक कर एग्जाम हॉल। तो से मिस्टेक कौटी हो कौन हो देखापी आमको बुझापी आमको वीडियो फास्ट लास्ट देखियो तो डेफिनेटली तुमको किसी शिखापी मिल। सो स्टार्ट करिया करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट वन इज करेंट। तो सपोज देयर इज ए कंडक्टर कंडक्टर कहले जो थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थी। अच्छा सो सपोज ये कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया हूँ कैपिटल ए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया देकी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज टी टाइम भितर क्रॉस करुच्ची देन करंट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट टाइम Q/T and that is the average current. Suppose 100 coulomb of charge 5 सेकेंड भितर क्रॉस सेक्शनल एरिया देखी क्रॉस करुच्ची ताहले एवरेज करेंट केते हेबो ना 100 coulomb by 5 सेकेंड। ठीक अच्छे तो एवरेज करेंट मैंने एति चार्ज फ्लो है एति टाइम भितर तो टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया बाय टोटल टाइम इज द एवरेज करेंट। यदि इंस्टांटेनियस करेंट हमको दरकार अच्छी सो इंस्टांटेनियस करेंट इज dQ/dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ टाइम। सपोज Q इज ए फंक्शन ऑफ T अच्छी मैंने Q फंक्शन ऑफ T लाइक 2T² + 5 एति कोलम मैं टाइम अनुसार चार्ज अलग अलग अमाउंट फ्लो हो देन से केस रे आम इंस्टांटेनियस करेंट बाहर करवा I = dQ/dt दैट्स इक्वल टू 4T दैट मीन्स एट टाइम T = 1 सेकेंड
current is 4 ampere, time t equal 2 second, current is 8 ampere. So particular time रे current केते 1 second रे केते 2 second रे केते 3, that is the instantaneous current, right? So current रो unit समस्त जानी already current रो unit कौन एम्पियर, जो सिंबलिकली कैपिटल ए रिप्रेजेंट करा जाए. और डायमेंशन करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, तो डायमेंशन तार ए, करेक्ट. देन करंट टाइप्स ऑफ करंट. फर्स्ट आसीबो स्टेडी करंट. सेकेंड वन इज वेरिंग करंट. मुझे कंपेयर करके लिखि दूची एट ए टाइम. सो स्टेडी करंट होची कौन, द करंट दैट मैग्नीट्यूड और लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ करंट दैट doesn't change with time. Our varying current means magnitude of current that change with time. Magnitude of current that change with time. तो यहाँ जो आम ग्राफ प्लॉट करवा टाइम अनुसार करंट, तो स्ट्रेट लाइन हम एंड दैट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस. माने करंट टाइम अनुसार चेंज हो ना, तो स्टेडी करंट कहवा. यदि करंट टाइम अनुसार चेंज होतिबो लाइक दिस एबडा, ताको हम कोन कहवा वेरिंग करंट कहवा. तो वेरिंग करंट भितर अल्टरनेटिंग करंट भी आसुची, जे कि टाइम अनुसार कौन होची मैग्नीट्यूड चेंज करची प्लस डायरेक्शन भी चेंज होची, ताको हम वेरिंग करंट कहवा. और डायरेक्ट करंट जोटा माने स्टेडी करंट इज आल्सो डायरेक्ट करंट डीसी, जे कि कांस्टेंट करंट बैटरी द्वारा जो करंट फ्लो होची कांस्टेंट करंट फ्लो होची, ताको हमें कौन कहवा स्टेडी करंट कहवा. ठीक अच्छे. तो स्टेडी करंट केस रे सपोज गोटे कंडक्टर अच्छी तार यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अच्छे. तो जब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अच्छे ताले ईच पॉइंट रे करंट कौन हम सेम हम I1 I2 I3 आर सेम. जदि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ताले कौन हम, सो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शंस एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज होची एंड करंट सपोज लेफ्ट टू राइट केमती फ्लो होची आई अमाउंट ऑफ करंट, से केस रे भी करंट कौन हम सेम हम ईच पॉइंट सेम हम. ताले करंट इज सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया. ये हूँ कॉन्सिक्वेंस ऑफ किर्चॉफ्स करंट लॉ. सी कहूँ कि देयर इज नो एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज एट ए पॉइंट. जो जी चार्ज आसो जी चार्ज लीव हो, जी इनकमिंग से आउटगोइंग. सो नेट करंट कौन रो कन्स्टांट रो, नेट करंट कन्स्टांट रो तो एट एनी पॉइंट. ठीक अच्छे. नेक्स्ट हमें बेसिक कन्वेंशन गोटे आम कन्वेंशन कहवा जोटा कि कौन ना करेन्ट डायरेक्शन कौन हम जो जो आड़े नेगेटिव चार्ज जो पटे फ्लो होची तार अपोजिट डायरेक्शन में हम. सपोज द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड और मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन लेफ्ट को मूव मीन्स ये पॉजिटिव टर्मिनल थी एंड कंडक्टर आर पटे नेगेटिव टर्मिनल थी, तो तार अपोजिट डायरेक्शन में करंट कहवा आई. एवरीवन नो दिस. नेक्स्ट आसी करंट डेंसिटी. Current density is defined as J equal to I by A, current by area, provided that the area should be perpendicular, cross sectional area should be perpendicular to the current. अब यार डायरेक्शन टा आम एनकेप दे परिबा जे कि along the direction of current हो. तो जब मैग्नीट्यूड लिखा जे करंट डेंसिटी इज करंट बाय एरिया, तो
if current is constant, suppose steady current is flowing, तो current constant एबे 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 जहाँ भी चैप्टर रे पढ़िबा हम steady current पढ़िबा, constant current पढ़िबा, ठीक अछि। सो current जदि constant अछि ताहले J proportional to 1 by cross sectional area। तमने जदि हमें गोटे नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया नबा माने गोटे कंडक्टर नबा जार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इच पॉइंट रे अलग अलग होथिबो। सपोज दिस इज द पॉइंट 1 सेकंड एंड थर्ड, से केस रे करंट तो नो डाउट सेम हो। फर्स्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखि जति करंट, सेकंड रे भी सेम करंट, थर्ड रे भी सेम करंट, किंतु जो करंट डेंसिटी टा अलग अलग हबो। करंट डेंसिटी सपोज दिस इज J1 एट J2 J3 एंड हम पहले इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो करंट डेंसिटी एट पॉइंट ए जेहेतु एरिया लेस अच्छी तो मैक्सिमम हम, ताले तो जिते अधिक एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया हम सेठी कम करंट डेंसिटी फ्लो हो, ठीक अच्छे। बट जब क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वाल अच्छी ताले सेठी करंट भी इक्वाल आउ करंट डेंसिटी भी इक्वाल इच पॉइंट रे, एंड देयर इज ए रिलेशन बिटवीन करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। So that relation is Ohm's law. J equal to sigma E is the Ohm's law. J होची कौन करंट डेंसिटी आउ E is the electric field and sigma को हमें कहबा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक अच्छे। और J is direct proportional to electric field, larger the electric field larger will be the current density। आउ J रो यूनिट कौन लिख परिबा, J रो करंट डेंसिटी रो फिजिकल क्वांटिटी तार यूनिट हो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर I by A अछि, ठीक अच्छे। देन आसिला नेक्स्ट टर्म दैट इज फिजिकल क्वांटिटी दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो, सपोज दिस इज ए कंडक्टर जार लेंथ होची केते L अछि और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, करेक्ट। एंड आको आमे कोन करले गोटे एक्सटर्नल बैटरी सह कनेक्शन कले, जो बैटरी रो पोटेंशियल डिफरेंस होची V। तो सपोज दिस पॉइंट ऑफ पोटेंशियल V हला, पॉजिटिव प्लस मींस हाई पोटेंशियल और माइनस मीन लो पोटेंशियल। सो सपोज लो पोटेंशियल जोटा अछि तार पोटेंशियल 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कंडक्टर केते हला ना V वोल्ट, लेंथ होची A, एरिया क्रॉस सेक्शन A। तो कंडक्टर भीतर अछन के ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जेहेतु हम बैटरी कनेक्शन कलु तो दिस साइड लेफ्ट साइड जो लेफ्ट टर्मिनल टा रहिबो पॉजिटिव हे जिवो आ एटा नेगेटिव, दैट मीन्स गोटे साइड प्लस टा मीन्स हाई पोटेंशियल एनादर लो पोटेंशियल। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन अच्छी कंडक्टर भितर ता उपरे गोटे फोर्स पड़ो, फोर्स कौन पड़ो जेहेतु बैटरी लगेगा V, तो एक्सटर्नाली गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट है कंडक्टर रे दैट इज E। आउ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन उपरे फोर्स दब एंड दैट फोर्स इज F इक्वल टू Q आम जानी। सो Q हूँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस E इंटू कैपिटल E। So that means it is clear that the force will act opposite, minus means opposite to the electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड को अच्छी तो फोर्स कुआड़े पड़ो लेफ्ट आड़, तो इलेक्ट्रॉन कुआड़े ड्रिफ्टेड हम ना टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, सो दैट करेंट कुआड़े फ्लो हम नेगेटिव आड़ को। सो करेंट पॉजिटिव नेगेटिव फ्लो हम, इलेक्ट्रॉन उल्टा जीव रिवर्स दिव तार। तो द वेलोसिटी विथ व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड towards the positive terminal is known as drift velocity। ताकू सिंबल होची Vd जार यूनिट मीटर पर सेकंड, and drift velocity Vd is given by Ev by ml into tau। E is the charge of one electron 1.6 10 to minus 19 coulomb and V is the potential difference between two ends
of the conductor along the direction of current. Direction of current. Current जो direction जाउची सही direction रो दीटा एंड भितर potential difference. Suppose this is rectangular conductor. Suppose आमे potential this is positive गले या को negative गले ताले current एपटे flow होची. तो current जो direction flow होची सही terminal भितर ए दीटा भितर potential difference. यदि current टा left to right को एमती flow होइतांता ताहले this terminal and this terminal भितर potential difference. And L is the here L is the length of conductor along the direction of current. Direction of current. जो डायरेक्शन में करंट फ्लो होची सही डायरेक्शन में लेंथ. सपोज लेफ्ट टू राइट टू करंट फ्लो होची तो दिस लेंथ विल बी कंसीडर एल होबो एटा. यदि वर्टिकली करंट y एक्सिस अलोंग करंट फ्लो होची ताले दिस विल बी द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. And m is the mass of electron. Now and tau is the relaxation time is the time between two successive collision of electrons. Electron collision भितर time ताको कहबे हमें relaxation time. And the relaxation time completely depends on temperature and the material. Relaxation time tau is inversely proportional to temperature, and T is here temperature. Temperature बढ़िले गोटे particular material रो conductor रे temperature बढ़िले collision quick हबो. Electrons रो collision quick हबो so that relaxation time कमिबो. ठीक अछि. Relaxation time कमिला माने drift velocity कम हबो decrease हबो. ताले if temperature increases relaxation time will decrease so drift velocity will decrease. ताले हम कहबे v drift velocity proportional to 1 by t. temperature बढ़ले drift velocity भी कोन कमिबो. okay next होची relation between current and drift velocity. Suppose in a conductor of a special material of a specific material like copper, aluminum, gold, particular material लोट अच्छी जो थे कि small and denote करची number of electron per volume माने electron concentration. ये डिपेंड करे मटेरियल उपरे. कपर अलगा, एल्युमिनियम, गोल्ड समस्त अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. अब ई यदि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया देन करंट आई इक्वल टू NEA VD. दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. okay then another term will appear, that is mobility mu. Mobility mu is defined as drift velocity per unit electric field. Drift velocity per unit electric field. ताने हमें गोटे कंडक्टर 1 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट न्यूटन पर कूलम 1 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड रे ड्रिफ्ट वेलोसिटी गोटे इलेक्ट्रॉन केते हेबो से आल्सो डिफाइन मोबिलिटी माने हाउ फ्री एन इलेक्ट्रॉन टू मूव. तो ये डिपेंड करे मटेरियल टू मटेरियल अलग हेबो. एंड आल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म दिस इज आल्सो म्यू आल्सो कहीं ना VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD is inversely proportional to temperature.
So mobility is also inversely proportional to temperature. Temperature बढ़िले mobility कौन decrease करिवो. Okay, come back to this formula I equal to NEA VD. So हम I equal to NEA VD drift velocity place रे EV by ml into हम tau लिखि परिबा. So that implies current I equal to N square A by ml tau into V. Or we can write V equal to कितने लिखिबा. Sorry, ml reciprocal है जो ml n square a tau into I. Okay, and this term is the resistance of the wire or conductor. तो ये वाला V equal to कितने ना IR, which is Ohm's law. ठीक है. और Ohm's law स्टेट दे कहि परिबा current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference across it or across the length that is in the direction of current. ठीक है. सो देखो जो R ना रेजिस्टेंस R इज द रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस कहाँ पे डिपेंड करछि स्पेशली रेजिस्टेंस डिपेंड करछि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, एन होछि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और ई होछि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देखो ये इंडिविजुअल टर्म कथा हम एनालिसिस करबा. एम होछि तो मास, ये कांस्टेंट. तबे ई होछि कोन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट. आउ एन होछि कोन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी कांस्टेंट रहइबो. डिपेंड करे मटेरियल ऊपर. कॉपर अलगा, गोल्ड पे अलगा, समस्त पे अलग अलग हबो. आउ रहला रिलैक्सेशन टाइम टाउ भी कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल जदि टेम्परेचर कांस्टेंट अछि. ताले टाउ इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म ओनली हियर. तो गोटे आम नहीं कंडक्टर जार लेंथ होची एल आउ एरिया क्रॉस सेक्शन ए अच्छी. ताले एठी एल आउ ए भी कांस्टेंट जदि रहिला ताले रेजिस्टेंस विल बी कांस्टेंट इफ टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट. जदि लेंथ सेम अच्छी, एरिया फिक्स नहीं चंदी, हमें गोटे कंडक्टर नहीं चंदी, टेम्परेचर सेम, ताले V इक्वल टू IR. दिस लॉ इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर चेंज कले आर आउ से कांस्टेंट रही चेंज हो. ठीक अच्छे. तो बेसिकली रेजिस्टेंस R डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्रिकल शेप. M N E से तो सो प्रॉपर्टीज पर्टिकुलर मटेरियल प्रॉपर्टीज को जाऊँगी. टेम्परेचर कांस्टेंट रहा टाउ भी रिलैक्सेशन मटेरियल पर डिपेंड कर. तो ज्योमेट्रिकल शेप तार एल आउ ए पर डिपेंड करता है. रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द कंडक्टर. सो आम लिखे ताले R आम लिखे हियर R इक्वल टू ML बाय N square tau into A. And these terms are purely depends on the material and temperature. So if temperature constant, then this term is the resistivity of the conductor or material. तो हम समस्त फॉर्मूला जानी चंती एटा acquainted. R equal to rho L by A. Rho is the resistivity. Resistivity रो यूनिट होची कोन ना ओम इनटू मीटर. सो ये टाइम पे रो इक्वल टू केते R by L. ताले हमें लिखि परिबा जे रेसिस्टिविटी रो इज सेम और फिक्स्ड ला कहबा फिक्स्ड और कांस्टेंट फॉर ए मटेरियल फॉर ए कौन लिखे फॉर ए मटेरियल एट कांस्टेंट टेम्परेचर constant T is the temperature. टेम्परेचर जब मतलब कांस्टेंट रही रेसिस्टिविटी कांस्टेंट रहिबो. टेम्परेचर चेंज होला माने रेसिस्टिविटी चेंज हो. आ मटेरियल चेंज हेले भी चेंज हो. सपोज कॉपर रो अछि ताको हमें गोटे कॉपर रो वायर अछि ताको हमें स्ट्रेच कर दो किंतु दु पार्ट डिवाइड कर दबा कि 100 पीसेस करले फिर भी रेसिस्टिविटी सेम रहबो जदि टेम्परेचर सेम रही.
जदि आम कपर देखुचे गोल्ड देखुं ताले डेफिनेटली तांकर रेजिस्टिविटी अलग अलग हम कि सेम मटेरियल अच्छी माने रेजिस्टिविटी सेम रहिबो ओके रेजिस्टिविटी गला देन आम ओम्स लॉ रे किसी बेसिक डिटेल्स डिस्कस करिया जोटा कि आम V इक्वल टू IR फॉर्म लिखुं V इक्वल टू IR जदि आम y V को आम y लिखा एंड R इज रेजिस्टेंस कांस्टेंट ताको M सिंबल देली एंड I इज X so y इक्वल टू mx इज ए ग्राफ सो x एक्सिस रे आम प्लॉट करिया करंट को y एक्सिस रे प्लॉट करिया वोल्टेज को ताले द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन एंड दैट पास थ्रू द ओरिजिन ठीक अच्छे ताले ये जो ग्राफ रो स्लोप टा हबो V by I and that slope will be the resistance and that slope will be the tan of theta आम जान सब थीटा जदि आम सपोज थीटा 0 डिग्री ताले स्लोप केते हबो 0 सपोज थीटा इज 90 डिग्री tan 90 के इनफिनिटी ताले विथ इंक्रीज इन थीटा बढ़िले स्लोप बढ़िले सॉरी एंगल थीटा बढ़िले स्लोप बढ़िबो वैल्यू ऑफ द स्लोप बढ़िबो मींस रेजिस्टेंस बढ़िबो सपोज VI कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ रे डिफरेंट मटेरियल अच्छी डिफरेंट मेटाल्स अच्छी तांकर जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ अलग अलग आसी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर डिफरेंट मटेरियल थाई पारे कि सेम मटेरियल लो सेम शेप एंड साइज थाई पारे ज्योमेट्रिकल शेप थाई पारे कि बस VI ग्राफ गुड़ा 1 2 3 पोजिशन एमती अच्छी तो आम ये क्लीयरली कहीपर जो R3 R2 R1 भितर रिलेशनटा कौन सिंस एंगल आम इनक्रीजिंग ऑर्डर देखुं सो स्लोप भी इनक्रीजिंग ऑर्डर रही कह रेजिस्टेंस R3 इज ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1 सब लेस रेजिस्टेंस कार R1 करेक्ट तो मोर स्लोप मोर विल बी द रेजिस्टेंस वैल्यू बट ये जब आम चेंज कर सपोज आम कौन कर एक्स एक्सिस रे आम वोल्टेज लिखिलु वाई एक्सिस रे करेंट ताहले भी से ग्राफ स्ट्रेट लाइन हम बट यही केस रे स्लोपटा कौन बुझे ना I by V y by स्लोप इज dy by dx वाई एक्सिस वाई रो चेंज बाय एक्स रो चेंज तो वाई रे कि अच्छे I तो I by V कौन बुझे I by V 1 by रेजिस्टेंस 1 by रेजिस्टेंस इज नथिंग बट कंडक्टेंस G सिंबल दबा ताको ताली ये कंडक्टेंस डिनोट करिवो यार स्लोप VI रो स्लोप जदि एक्स एक्सिस रे वोल्टेज आ y एक्सिस रे करंट ताले ये कंडक्टेंस को बुझेबो किंतु ता पूर्व जो आम एबे जोटा कहलु जस्ट पूर्व I आउ V वर्सेस सी स्लोप R बुझाउतला रेजिस्टेंस बुझाउतला जदि क्वेश्चन आम ये करवा ये वोल्टेज दबा ये करेन्ट दबा जदि आम सेम प्लॉट 1 2 3 तीन मटेरियल अलग अलग मटेरियल आम ड्र कर रेजिस्टेंस रिलेशन कंप्लीट अलग हो कौन हम ना R3 लेस हम देन R2 देन R1 कौन पे ना यार स्लोप गुड़ा 1 बाय रेजिस्टेंस को बुझाई ठीक अच्छे एंड और कथा सबू सबू मटेरियल्स और सब्सटेंस ओम्स लॉ को ओबे करेंगे the substance or the material that obeys Ohm's law are known as ohmic conductor all metal and alloys obey Ohm's law तो ସେମାନେ ohmic conductor ଭିତରେ ଯିବେ ଯଦି ଆମେ ସପୋଜ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଭର୍ସେସ୍ କରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଗ୍ରାଫ୍ କରିଥିବା ଦେଇଥିବା ଭୋଲ୍ଟେଜ ଏପଟେ କରେଣ୍ଟ ତିନି ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଅଛି ସପୋଜ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ voltage versus current graph, this is a voltage versus current graph, and suppose this is another voltage versus current graph, and this is another voltage versus current graph. ताले different materials पाई हमें ड्रॉ को चार्टा ग्राफ ड्रॉ को चार्टा मटेरियल पाई तो क्वेश्चन यदि पचारे कोटा ओम्स लॉ ओबे करूची ताले केवल स्ट्रेट लाइन नुहे द स्ट्रेट लाइन दैट पासिंग थ्रू ओरिजिन केवल जी ओरिजिन देखि पास होची सी ही ओमिक कंडक्टर हम जी ओरिजिन देखि पास करछि ताको हम ओमिक कंडक्टर कहबा क्लियर
Okay. Then temperature dependence on resistance. So ये important points. Temperature dependence. Suppose आम कौन कर टेम्परेचर इनक्रीज कर टेम्परेचर जो आम इनक्रीज कराइबा ताले कौन हम ना रिलैक्सेशन टाइम रे डिक्रीज करिवो ताले रेजिस्टेंस आर कौन हम ना आर इनक्रीजेस कि पाने रेजिस्टेंस आर इज प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम देखिए इटी रेजिस्टेंस इटे हमें देखिए आर इक्वल टू sorry r is inversely proportional to 1 by tau relaxation time is inversely proportional so temperature बढ़िले ये कौन हम रिलैक्सेशन टाइम कमिबो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स रेजिस्टेंस बढ़िबो ताले फॉर कंडक्टर्स फॉर मेटल्स और फॉर ओमी कंडक्टर्स कहि परिबा with increase in temperature resistance increases ठीक अच्छे and for semiconductor टेम्परेचर बढ़िले रेजिस्टेंस कौन हम डिक्रीज कर और रेसिस्टिविटी भी डिक्रीज कर ऊपर लिखिपर रेसिस्टिविटी बट देयर आर सर्टेन एलॉयज which resistivity or conductivity or resistance doesn't vary with temperature से तार एग्जांपल होची manganese and constantan जे कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ठीक अच्छे तो आम गोटे टेम्परेचर कोएफिशिएंट गोटे टर्म इंट्रोड्यूस करिया एबे सपोज आरटी होची कोन आरटी स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस और मटेरियल एट T डिग्री सेंटीग्रेड एंड R0 इज रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड यदि आम 0 डिग्री सेंटीग्रेड रे रेजिस्टेंस R0 जानी थिबा तार टी टेम्परेचर 0 डिग्री ना जना अछि टी टेम्परेचर परे तार रेजिस्टेंस केते हो ना RT इक्वल टू R0 into 1 plus alpha T where alpha is the temperature coefficient of resistance and मन रखिबो alpha is positive for the metal or ohmic conductor मैं टेम्परेचर बढ़िले रेजिस्टेंस बढ़िबो तो अल्फा पॉजिटिव अल्फा होची नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर टेम्परेचर बढ़िले रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कमिबो आउ मैंगानीज और कॉन्स्टेंट तांकर होची अल्फा वैल्यू केते 0 ता माने टेम्परेचर बढ़िले किंबा कमिले रेजिस्टेंस रे किछि चेंजेस आसीबो नाही क्लियर एतिकी थिला बेसिक टर्म्स आउ रहला कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 बाय कंडक्टेंस आउ रेजिस्टिविटी यूनिट होची ओम मीटर कंडक्टिविटी यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ताको हम साइमन भी को और रेजिस्टेंस यूनिट ओम आउ कंडक्टेंस यूनिट ओम इनवर्स ठीक अछि एवरीवन नो दिस एबे हमें न्यूमेरिकल को आसीबा ओके न्यूमेरिकल कौन सपोज गोटे वायर और लेंथ होची एल अच्छी बर्तमान दिस वायर इज स्ट्रेच टू n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ बर्तमान यार लेंथ रे केते चेंज हो गला ना n टाइम हो गला तो ध्यान से सुनियो टिके लेंथ अच्छी l बर्तमान लेंथ केते हो गला ना n टाइम l स्ट्रेच कर दलो एरिया तो डेफिनेटली कमिबो सो सपोज क्रॉस सेक्शनल एरिया थिला a एटी होची एरिया होची एडस तो क्वेश्चन होची व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस आर डेस ओरिजिनल रेजिस्टेंस सपोज r अच्छी ताले न्यू रेजिस्टेंस केते हो जदी n टाइम स्ट्रेच कर दिया गला तो इट विल n टाइम आर फर्स्ट ऑप्शन
r dash equal to n time r. Second option is r dash equal to n square time r. Third option is r dash equal to r. Fourth option होची r dash equal to r by n. तो स्क्रीन को पॉज कर फास्ट निजे ट्राई करो देन सॉल्यूशन देखिए तेरे में सॉल्यूशन करिया जेहेतु सेम मटेरियल अच्छी तो रेजिस्टिविटी डेफिनेटली सेम रहिबो एटी क्वेश्चन मेंशन नहीं क्वेश्चन किसी मेंशन नहीं टेम्परेचर विषय जदि क्वेश्चन किसी मेंशन नहीं टेम्परेचर कथा तो आम टेम्परेचर कांस्टेंट एटी एज्यूम करि परिबा सो हमको लेंथ एल सहित एल डैश रिलेशन जना अच्छी कि मैंने एल डैश इज एन टाइम एल हो गला बाकी एरिया केते डिक्रीज करबा हम आइडिया नहीं सेति पय हमें गोटे अनदर पैरामीटर रो हेल्प नहीं परिबा दैट इज वॉल्यूम हमें जदि हमें स्ट्रेच करछन ताले वॉल्यूम सेम रहिबो लेंथ इंक्रीज करि गला एरिया डिक्रीज कर जो बट वॉल्यूम विल रिमेन सेम तो से कांसेप्ट यूज करे वॉल्यूम होची बेस एरिया इनटू हाइट सेकेंड आफ्टर स्ट्रेचिंग ए डैश इनटू एल डैश है सो ए एल इक्वल टू ए डैश इनटू एल डैश टा कहते ना एन टाइम एल सो एल एल कैंसिल आउट सो न्यू एरिया ए डैश इज ए बाई एन बतन हमें जानते रेजिस्टेंस ओरिजिनल वायर आर इक्वल टू कहते ना रो एल बाई ए सो न्यू रेजिस्टेंस कहते हैं आर डैश इक्वल टू रो रेजिस्टिविटी सेम रहिबो एरिया लेंथ होची एल डैश रहिबो एरिया होची ए डैश तो रो एल डैश प्लेस रे हमें लिखिबा एन टाइम एल ए डैश प्लेस रे कोन लिखिबा ए बाई एन तो रो एन स्क्वायर हो गला एल बाई ए सो एन स्क्वायर टाइम्स आर हो तो ये रिजल्ट को हम मन भी रखीदे भल जदि आम गोटे वायर को एन टाइम स्ट्रेच करुँच तार रेजिस्टेंस केते चेंज हो ना एन स्क्वायर टाइम चेंज हो सपोज ए वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ then its new resistance will be 4 times original length 4 time of original resistance ठीक अच्छे सेकेंड नेक्स्ट वन प्रीवियस क्वेश्चन थिला आम लेंथ चेंज कर देलु एबे क्वेश्चन कौन सपोज द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सर्कुलर टाइप डिस्क टाइप अच्छी क्रॉस सेक्शनल एरिया जार रेडियस होची आर दिया एंड इट हैज लेंथ एल हमें कौन कलु या स्ट्रेच कलु इट विल स्ट्रेच कलापर सपोज रेडियसटा डिक्रीज हो गला आर बाई एन बर्तमान न्यू रेडियसटा होची आर बाई एन माने रेडियस बिकम 1 बाई एन टाइम्स ओरिजिनल और इनिशियल वैल्यू इनिशियल जो रेडियस थिला तार 1 बाई एन टाइम्स रेडियस हो गला स्ट्रेच कलापर ताले व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस आर डैश तो ऑप्शन दो तुमको आर डैश इक्वल टू एन टाइम्स आर सेकेंड बिट आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर थर्ड बिट आर डैश इक्वल टू एन टू द पावर 4 आर फोर्थ बिट आर डैश इक्वल टू आर तो स्क्रीन को पॉज कर निजे ट्राई करो एबे हमें सॉल्यूशन को जीवा सॉल्यूशन सेम कांसेप्ट यूज करिया वॉल्यूम रिमेन सेम सो ए फर्स्ट में फर्स्ट जो ओरिजिनल अच्छी वायर तार एरिया होची लेंथ होची एल तार ए इंटू एल वॉल्यूम है आफ्टर स्ट्रेचिंग केते हो ना ए डैश इंटू एल डैश वॉल्यूम सो एरिया है पाई आर स्क्वायर इंटू एल एटी पाई आर डैश स्क्वायर इंटू एल डैश पाई पाई कैंसिल सो आर स्क्वायर एल इक्वल टू पाई आर डैश प्लेस आम कौन लिखिपर ना आर बाई एन होल स्क्वायर इंटू एल डैश सो ये गला एन स्क्वायर एल इक्वल टू एल डैश ताले एल डैश इक्वल टू एन स्क्वायर एल है बर्तमान आम लिखे आर इक्वल टू के रो एल बाई ए सेम मटेरियल अच्छी सो रेजिस्टिविटी सेम रही सो आर डैश इक्वल टू रो लेंथ चेंज हो एल डैश बाई ए डैश सो रो एल डैश प्लेस आम के लिखा एन स्क्वायर इंटू एल आउ ए डैश प्लेस कौन लिखा ना पाई आर डैश स्क्वायर सो रो
n square l by pi r dash is r by n, तो ये वो r by n रो होल स्क्वायर, सो ये वो 4 टाइम्स सॉरी n स्क्वायर मैंने n टू द पावर 4 रो l by pi r स्क्वायर, so n to the power 4 rho l by pi r square बदले capital L लिखिबा, and this term the original resistance or initial value of resistance r, तो फाइनल आंसर है लगते n to the power 4 टाइम्स। ताले आमे जदि गोटे वायर को स्ट्रेच करूचंदी such that its radius become 1 by n टाइम्स, ताले न्यू रेजिस्टेंस केते हेबो ना n to the power 4 टाइम्स हे जिवो। सपोज आमे रेडियस को हाफ कर देले ताले न्यू रेजिस्टेंस केते हे जिवो 1 by 2 power 4 1 by 16 टाइम हे जिवो, ठीक अछि। तो हमें PYQ रो गोटे क्वेश्चन गोटे प्रीवियस क्वेश्चन SSB TGT रो जो रिसेंटली एग्जाम हेतले SSB रो सेतले गोटे क्वेश्चन थिला कोन a state where of uniform cross section is double on itself, its electrical resistance become first option 2 times of original resistance, second bit 4 time of original resistance, third bit 1 by 4 time of original resistance, fourth last bit 1 by 2 times of original resistance and initial value of the resistance। स्क्रीन को पॉज कर निजे फास्ट ट्राई कर। So a straight wire of uniform cross section is double on itself, दी टाइप रो क्वेश्चन आसे लेंथ डबल पचारे, लेंथ जदि डबल पचारिबो ताले लेंथ 12 हेई थांता, बट इट डबल्ड ऑन इटसेल्फ, गोटे वायर अच्छी से डबल हो जाउची माने फोल्डेड टाइप सिचुएशन, तान लेंथ रा l थिला केते गला लेंथ l by 2, सो न्यू लेंथ l डैश केते हो जाउची ना हाफ ऑफ l, ताले हम पढि जंदी n टाइम l हेले फाइनल आंसर केते हो n स्क्वायर, रेजिस्टेंस केते हो r डैश केते हो n स्क्वायर इनटू r, हम एटी पढिलु। जदि लेंथ n टाइम्स को हम चेंज कर दउ ताहले रेजिस्टेंस हो n स्क्वायर हे जो, तो हाफ मीन्स 1 by 4 टाइम्स हो 1 by 4 टाइम्स। जदि क्वेश्चन ने कहता जे स्ट्रेच वायर ने द स्ट्रेट वायर इज स्ट्रेच्ड such that its length become 2 times or its length is doubled, लेंथ यदि डबल हो गला कही था ताले एल डैश होता 2 टाइम एल, तो सही केस रे 2 रो स्क्वायर के 4 टाइम आर होता था, बट इट एक होची डबल ऑन इटसेल्फ मीन्स लेंथ रा l by 2 ही हो, करेक्ट। another क्वेश्चन सॉल्व करिए। A straight wire is doubled its length by 2 times, और स्ट्रेट एमती क्वेश्चन अच्छे स्ट्रेट वायर लेंथ बिकम 2 टाइम्स, मु क्वेश्चन को एक्सप्लेन करी कह दूची, ठीक अच्छे। तो लेंथ l थिला बर्तन लेंथ केते गला 12 है, वायर इज स्ट्रेच 2 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो पचार जी व्हाट इज द रेशियो ऑफ change in resistance to initial value of resistance। first option is 2:1, option B 4:1, option 3 3:1, option D होची 1:4।
निजे ट्राए कर लेंथ डबल हो गला पर रेजिस्टेंस रो रेशियो पचार देख लेंथ बर्तमान रेजिस्टेंस थी आर लेंथ कौन है चेंज है 2 टाइम्स हो गला सो न्यू रेजिस्टेंस आरडीएस केते हेबो ना 4 टाइम्स हो 2 स्क्वायर 4 टाइम्स आर हो तो ये रेशियो किंतु ध्यान से रखो रेशियो कौन चेंज इन रेजिस्टेंस पचारि तो न्यू रेजिस्टेंस 4 आर ओरिजिनल थिला 4 तो चेंज इन रेजिस्टेंस के 3 आर हला ओरिजिनल होची आर तो 3 आर बाय आर तो आंसर हम 3:1 चेंज इन रेजिस्टेंस बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस पचारि ठीक अच्छे बेले बेले चेंज वार्ड देखा जाए नहीं डायरेक्ट आंसर आम 2 स्क्वायर करदे 4:1 आंसर करदेलु एमती मिस्टेक ये क्वेश्चन ना मिस्टेक हवा चांसेस बहुत हाई अच्छे जमीक प्रिवियस क्वेश्चन भी आम देखिलु डबल ऑन इट्स लेंथ तो मैंने मैक्सिमम पिला 12 करदे लेंथ 12 करदेला बेलू आंसर 4 टाइम आस तार ऑप्शन आंसर भी अच्छी 4 टाइम्स तुम एग्जाम करके आस तुम लगे ठीक कि भूल अच्छी तो कॉन्सेप्ट ही सेम से समान कॉन्सेप्ट से फर्मूला तो गोटे समस्त सब जगह पढ़ुं आर इक्वल टू रो एल बाई ए से फर्मूला क्वेश्चन सल्व हो किंतु क्वेश्चन इज यूनिक टाइप डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आस तो क्वेश्चन मीनिंग बुझे परफेक्टली कर खाली फर्मूला मन रखिले सब किसी हम ना फर्मूला सहित क्वेश्चन कर क्वेश्चन ट्रिक्स बुझार अच्छी सो दैट विदाउट रॉन्ग माने पूरा परफेक्टली विथ एक्यूरेसी क्वेश्चन पूरा आंसर दे पारे ठीक अच्छे एनदर क्वेश्चन दबा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 wires capital A and B are of equal masses and of same material mass equal अच्छी same material माने resistivity same जानी बोले okay diameter of A is half of diameter of B and if the resistance of A is 24 ohm then resistance of B will be केते वो ऑप्शन 16 T/2 2/3 और 24 तो दया करी स्क्रीन को पॉज करी निजे फास्ट ट्राए कर जदि क्वेश्चन हो जाऊँ जो वीडियो को एत पर्यंत पूरा कन्सेंट्रेट देखीच ताले जदि क्वेश्चन हो जाऊँ दैट मीन्स यू अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेक्चर ठीक अच्छे तो आम सॉल्यूशन एवं करवा सो सॉल्यूशन ने आम कौन देखिए ना डायमीटर ऑफ ए इज हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ बी तो डायमीटर हाफ अच्छे रेडियस भी हाफ हम तो रेडियस ऑफ ए इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ बी एतकी हम डाटा पाइले एंड तुम पचार आर ए देछि आर बी पचार माने आर ए मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ ए देछि 24 ओम रेजिस्टेंस ऑफ बी पचार क्वेश्चन मार्क केते हम ऑप्शन हो जाए तो आम जानते रेजिस्टेंस आर ए फर्मूला हूँ रो एल बाई ए लेंथ ऑफ ए बाय ए हूँ एरिया सो रो लेंथ ऑफ ए एरिया केते पाई इंटू आर ए स्क्वायर देखो ये लेंथ रो भी ये लेंथ विषय किसी इनफॉरमेशन ना रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट सो से आमको कौन कर दीटा आउ कि हिंट्स खोजा पड़ो जेहेतु इक्वाल मास अच्छी अब सेम मटेरियल देखी तो डेंसिटी सेम हम सेम मटेरियल जेहेतु डेंसिटी सेम सो आम जानते डेंसिटी इक्वल टू डी सिंबल देली डेंसिटी इक्वल टू केते मास बाय वॉल्यूम सो मास केते हेबो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम सो क्वेश्चन गिवन होची मास ऑफ ए इक्वल टू मास ऑफ बी तो मैंने मास इन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ ए इक्वल डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ बी करेक्ट सो डी इज द डेंसिटी एंड भी होची वॉल्यूम एर वॉल्यूम केते ना एरिया एरिया होची पाई इंटू आर ए स्क्वायर इंटू लेंथ होची एल ए एटी डी रहा वॉल्यूम होची पाई आर एरिया होची पाई बी पाई इंटू आर बी स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ द सेकेंड वायर एल बी सो डी पाई कटिगला सो आर ए स्क्वायर बाय आर बी स्क्वायर इक्वल टू
कौन कर आर स्क्वायर हाँ एल बी बाई एल ए और आम लिखिपर एल ए बाई एल बी इक्वल टू आर बी बाई आर ए रो होल स्क्वायर ठीक अच्छे आम जानते आर बी बाई आर ए के ये पाइबा आम जानते आर ए इक्वल टू आर बी बाई टू ना सो आर बी बाई आर ए हूँ 2 टाइम्स ये 4 हो आंसर मैं सॉरी एल ए बाई एल बीटा हूँ 4 आंसर तो आम पहुँची ना ओके सो आंसर आम लिखा आर ए इज रेजिस्टेंस ऑफ ए इज रो एल बाई ए एरिया के पाई आर स्क्वायर सेमती रेजिस्टेंस ऑफ बी के लिखा रो एल बी बाई एरिया पाई बी स्क्वायर सो आर ए बाई आर बी कौन हो सो आर ए बाई आर बी इक्वल टू जी आम करवा ताले सब कैंसिल हो गला एल ए बाई एल बी इंटू आर बी बाई आर ए होल स्क्वायर और एल ए बाई एल बी के एल ए बाई एल बी वैल्यू 4 तो 4 इंटू एगेन देखो ये आर बी बाई आर ए होल स्क्वायर अच्छी तो ये भी 4 तो 16 है क्वेश्चन पचार आर बी वैल्यू माने रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर बी वैल्यू सो ये आर ए बाई के 16 आर ए वैल्यू 24 बाई 16 आम 8 रे काटिले ये 3/2 ओम हम आंसर इज 3/2 ओम ठीक अच्छे सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए A cylindrical metallic wire is stretched to increase its length by 10%. Calculate percentage increase in resistance. तो ऑप्शन देछि तो स्क्रीन को पॉज करके निजे ट्राई करो एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर तो सॉल्यूशन करिया से जो मेटालिक वायर को मैं स्ट्रेच करले केते 10% इंक्रीज करलु लेंथटा सपोज ओरिजिनल लेंथ बी एल तो न्यू लेंथ एल डैश के ना एल प्लस एल रो 10% तो एल इंटू 10/100 सो ये वाला 100 एलसीएम वाला 100 तो 110 एल सो एल डैश इज 11/10 इंटू एल सो व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस देन आर डैश इक्वल टू के आम ऑलरेडी आम पढ़ी जे दिस इज द एन वैल्यू सपोज आम एल डैशटा है एन टाइम जदि एल हुए तो रेजिस्टेंस के ना एन स्क्वायर इंटू एल हम तो एन मीन्स 11/10 होल स्क्वायर इंटू सॉरी ये आर है इंटू आर सो 121/100 इंटू आर 11 स्क्वायर 121 इंटू 100 तो बर्तमान परसेंटेज चेंज पचार इन रेजिस्टेंस सो आर डैश माइनस आर बाई आर इंटू 100 ना परसेंटेज चेंज तो एमती करा जाए सो 121 माइनस 121/100 माइनस 1 होल इंटू आर बाई आर इंटू 100 सो ये कैलकुलेट कर ले 100 को एलसीएम आर आर तो कैंसिल हो गला सो ये 21 इंटू के 100 सो ये हो 21%. So 21% is correct answer. ठीक अच्छे so thank you all for watching the video और description ने नंबर दिया है से मेसेज करिकी डायरेक्ट ग्रुप रे जॉइन हो पारो और लाइव क्लास डेली इवनिंग रे चली 8 PM इवनिंग 8 PM to 10 PM 2 आवर डेली हम आमे फॉर द 1 वीक क्लासेस कंप्लीटली फ्री रखछंदी देन पेड वर्जन क्लास करिवो एंड जो कि डेली क्लास नोट्स जोरा पढ़ा हबो तार पीडीएफ भी पाई दियो एंड ऑल गाइडेंस तुमको हेल्प कराओ एनी डाउट यू कैन आस्क थैंक यू.